658 नहीं नहीं, ये 22 जुलाई का है सर। उसमें शायद मिला था, उसमें मिलके हमने सर, नहीं जुलाई का तो सर नहीं मिला है क्या? नहीं, आपको 2 अगस्त में आप रिसीव किया है, 2 अगस्त में आपने रिसीव किया उसको, टाइम शेड्यूल पे आपने साइन किया उसको 2 अगस्त को। इसमें सर वही सेम इंफॉर्मेशन को पब्लिश किया क्योंकि हम बताया था कि शायद ये सेम आपका इंफॉर्मेशन। कहना ये था कि जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया है दैट इज इनएडिक्वेट, उसमें जो हमको चाहिए था वो पूरा नहीं है। तो उन्होंने बोला था कि आप आके डॉक्यूमेंट्स को ऑफिस में चेक कर सकता है कि आपको इसमें से क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। और 658 का ना सर, वो 650 that was regarding 650। अच्छा, 658 का सर ये ओ, ये 703 है, 703। ओके, हाँ, इसका आपको क्या बोलना है? इसमें सर हमने ये इसका जो किया है तो जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हमने उन्होंने हमको पब्लिश नहीं किया, उसको हम बाय सीरियल वाइज हमने इसको भेजा तो वो भी एक कॉपी दिया और अपने को भी एक कॉपी हमने ये है, This is regarding this one. हाँ, तो वो बोल रहा है हमको ये वाला मिला है। तो ये रिगार्डिंग जो एफआर हो गए हमको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिला ना सर, वही हमने नहीं, ये तो 12 जून का है ना, तो उन्होंने आपको 22 जुलाई को भेजा है, उसके बाद भी आपका प्रॉब्लम है। सर। उसमें तो हमको कोई नया इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिला है, नया इन्फॉर्मेशन तो सर सेम ही था वो नहीं, आप 2 अगस्त को आपने रिसीव किया, जब आप देखा तो उसमें भी यही प्रॉब्लम है। सर उसमें इन्फॉर्मेशन जो बराबर ही है, कुछ भी नया नहीं है, बस हमने एक्सप्लेन को ये पीआईओ का तो उसको भी हमने बताया। अच्छा, पर उसका आपका कोई चिट्ठी है? चिट्ठी तो हमको सर नहीं है मेरा, यही है मेरा अभी। नहीं, ये तो पुराना वाला है ना, हाँ हाँ ये तो 12 जून का है। 12 जून के बाद में उन्होंने आपको बाय पोस्ट 22 जुलाई को भेजा, आपने 2 अगस्त को रिसीव किया है, उसके बाद में कोई नहीं अपडेट सर, वो जो रिसीव किया वाला जो ये कॉपी होगा सर, इसका 86 का हो सकता है रिगार्डिंग, नहीं। क्योंकि पीआईओ से दो पैसे ना सर, तब जैसे कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि नया इन्फॉर्मेशन तो मेरा हिसाब से हमको नहीं मिला, जिनमें से 5 साल और नया बनाना सर, क्योंकि आपको जो सीसीएस का जो इन्फॉर्मेशन मिला था उसमें तो हमने वो कुछ नया रिपोर्ट बना के ये आप लोग से कोई इंक्रीज कराया था सुना सर, ये नवीन मानसून ये 703 का तो सर इसमें तो कोई नया अपडेट तो नहीं है। अच्छा, मानो साहब, कैन यू हियर मी? अच्छा, the referent is saying that though he had received the information sent by post dated 22nd July, which was received by him on 2 August, he says verbally, though there is no written record with me to say that there was nothing new that was provided in the document that you had sent by post. Did the individual communicate with you with reference to this discrepancy? हाँ जी, correct. Yes, sir, मेरा क्यों Hmm. नहीं, आप नहीं पहुंचे बोल रहे हैं, बट आपने रिसीव तो किया है ना। सर वही तो कंफ्यूजन है सर, ये
नहीं उससे कंफ्यूजन लेके नहीं आना है ना। ये सिर्फ ये कहता है इन्फॉर्मेशन फॉलो में दिया है क्लियरली टिक नंबर मेंशन हाँ किया 703 मेंशन किया है। है मेरा पास तो नहीं आया है क्योंकि आने से तो हम यहाँ लेके आना क्योंकि इस पर हम जो इन्फॉर्मेशन मिला है वही चीज लेगा तो कोई इस पर तो आपने जो रिसीव किया वो डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास में? आप पोस्ट मेरा में पास रिसीव तो किया? नया इन्फॉर्मेशन तो नहीं है नहीं, वो कहाँ है डॉक्यूमेंट जो आपको 2 अगस्त को आपने रिसीव किया था? सर वो घर में हो पर वो 658 का रिगार्डिंग हम पैसे लगा है क्योंकि नहीं 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 658 ये 703 बोल रहा है यार इस पे। क्योंकि इस पर मैं ये स्टडी का जब तो 658 में कुछ नया अपडेट मिला है 658 में नया अपडेट मिलने के कारण हम तैयार है कि ये इन्फॉर्मेशन मेरा पास है हमको मिला है एग्जाम में अपडेट सर मैंने केस दिया है, सबमिशन आपने सुना है? सर ये ऐसा है बात जो एआईओ का बात काम है तो मेरा ये बात पॉइंट जो ऐसा है कि सर हमने कोई ऐसा बेसलेस वाला यूजलेस वाला कोर्स तो हमने सीख नहीं किया है जो भी है सब कुछ डेफिनेट है और हर एक चीज जो क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट रहा है इसमें कोई भी ये पॉइंट ऐसा नहीं है कि जो एक जगह नहीं दे सकता बस लम सम में प्रिंट करके पेपर देना तो सर वो कोई पेपर दिया वाला कहानी नहीं है सर हर एक चीज तो इसको इस सीरियल वाइज हमने जो सीख किया सीरियल वाइज हमको आप देना चाहिए अब जहाँ का दे दिया अब मेरा जूता दे दिया ऐसा ये तो कोई ऑथेंटिक वाला रिप्लाई नहीं है ना क्योंकि हमने यार कोई जो हमने जो यहाँ सीख किया है इस पर गाइडेंस का थ्रू से ही हमने अच्छा मनाओ, टेल मी एक बात बताइए, जो आपने डॉक्यूमेंट भेजा है उसका आपने कोई लिस्ट बनाया था या बनाया है? तो ये लोग मतलब जब प्रोटीन कुछ नहीं है पेपर प्रिंट करके ऐसा सीरियल वाइज हमने एक पेज में नहीं मनाओ साहब, let me explain let me explain one thing. when you when you give response to an appellant or an applicant, you are supposed to answer the queries serial wise as per the points listed by the applicants or the applicants. तो उसमें क्या हो जाता है, एक एक बार में आप बोलेगा कि इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल, आप बोल रहे नहीं है, तो सीरियल वाइज बोलना है इंफॉर्मेशन नॉट हेल्ड इन दिस ऑफिस since this office was raised and this information pertains to something which was predated, I mean it is beyond 2020, ऐसा करके you have to justify. And second thing is, when you don't have an information and you are able to justify it, you can put it in an affidavit and give it to the applicant to say that here is the affidavit and I am saying that this information is not available for this and this and this reason. You have to justify the non-availability. आप समझ गया बात से? आप पॉइंट समझ गया ना? By saying that I don't have it does not satisfy the applicant or the court. Okay. So what you have to do is, what you don't have, you please put it down in writing that these are not available with me. You prepare an affidavit and give a copy to the applicant and give a copy to the commission. Is it clear? Okay. So जो इन्फॉर्मेशन नहीं है वो लोग उसका जस्टिफाई करके वो कागज देगा, आप उसको देखिए। इफ यू फील दैट सर्टेन इन्फॉर्मेशन जो भी है, इफ यू वांट टू गो इंस्पेक्ट देयर ऑफिस, यू आर मोस्ट वेलकम। आप बोलिए मेरे को कब जाना है, हम उसके हिसाब से बात पास कर देंगे। सर आप मिलेंगे सर हाँ जी। अच्छा नहीं। हाँ हाँ
second, unfortunately, he does not have the documents which was received on 2nd August. तो बिना उसका अभी वो कैसा करेगा हमको मालूम नहीं है। हाँ, पता है। Okay. Sir, नहीं नहीं I will मेरा tell you. तो थोड़ा मिसकंसेप्शन क्या नहीं नहीं ऐसा करो, मेरे सुनो फिर सुनो, ऐसा कोर्ट का भी टाइम जायज होता है, से वेस्ट होता है। आप ऐसा करना, आप डॉक्यूमेंट्स को दोबारा पढ़ो, आपको क्या सेटिस्फाई नहीं हुआ उसको फाइल बनाओ, यू सेंड द कॉपी टू इंजीनियर बनाओ, एंड ऑल्सो कॉपी टू द कमीशन। I don't have the number of the PIO. I have the number of the representative. ये अच्छा, आप एक बार बनाओ, क्या PIO आया नहीं है, representative भी आ रहा है यार। यू मे लाइक टू शेयर द मोबाइल नंबर विद द, ओके, सिर्फ वर्बली हमारा हम सेटिस्फाइड नहीं है बोलने से काफी नहीं है, ठीक है यू हैव सर। टू स्पेसिफाई। यार मेरी बात सुनो, आप होमवर्क करके नहीं आया, इसलिए अभी आर्गुमेंट मत करो, यू हैव नॉट डन योर होमवर्क। आप 2 अगस्त का वाला को लेके हमको बताना चाहिए था कि ये आइटम नहीं दिया है, आप बोल रहे हैं हम तो मिला है लेकिन पता नहीं कहाँ है। नहीं सर। ऐसा नहीं नहीं, ऐसा प्लीज लेट नॉट, आपको मैं फिर भी टाइम दे रहा हूँ टू से दैट, आप 2 अगस्त वाला डॉक्यूमेंट को देखिए, उसमें क्या सेटिस्फाई नहीं है, उसका आप दोबारा लिस्ट बना के सेंड इट टू दी PIO, and also copy to the commission so that I am in picture about what you have done. And I am giving you time for 15 days to send this either by WhatsApp, either by email, or you want to send it by post. ठीक है? हम होगा। पोस्टल में भी भेज देगा और जल्दी करते हैं। Okay. ये कोई So give them 15 days time. Hmm. Uh, this question. Yeah. Yes, has been shared. हाँ, okay, okay, हाँ, फिर, Hmm. सर। और 16 क्या चीज है? सर ये लोग फिर और जो और काम का रिलेटेड जो ये काम को जो जिन्होंने एग्जीक्यूट किया जो काम है ना सर, उसका ही कुछ डिटेल्स ऐसा कुछ ये पर्सनल डिटेल्स अकाउंट डिटेल्स वगैरह कुछ तो नहीं है, जनरल वगैरह से जो इन्फॉर्मेशन है वो डिटेल्स। सर इसको अगर नहीं दे सकता है प्लेयर का ये तो सर आपका ये गाइडेंस का तो आप ये इसको तो आप लोग वायलेट कर रहे हैं ऐसा हुआ, क्योंकि मेरा मेरा हिसाब से ये थर्ड पार्टी नॉलेज जो ऐसा है कि यहाँ तो क्लियरली मेंशन है, अब जब तक पब्लिक ये रिलेटेड वाला काम में इन्वॉल्व नहीं होता तब तक पर्सनली पब्लिक वाला जो बेसिक वाला जो काम करता है पब्लिक का जो फंड में आप जो कुछ काम कर रहे हो आपका जितना भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया बोले जो पब्लिक पढ़ते हैं
इसमें आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि दिस इज थर्ड पार्टी का इंफॉर्मेशन है। उसका घर जाके थोड़ी मांगा है। ये जैसा मेरा सब्जेक्ट क्लियर है कि कुछ प्रोजेक्ट का अगेंस्ट है, और ये प्रोजेक्ट में जो जो रिलेटेड है, जो जो यहाँ का रिलेटेड है, सबका सब पब्लिक है। तो यहाँ में कोई थर्ड पार्टी का कोई इशू ही रेज नहीं होता। Yes, right to yes, right to society. Also, you can summon section 90. Section clear to have ये written सर to start. सेक्शन 8 का यहाँ में जे सब कुछ जे जे में क्लियरली मेंशन है। ये सब मेरा पास भी एक किताब है। तो यहाँ तो क्लियरली मेंशन है, जब तक थर्ड पार्टी इशू तब तक होता है जब पर्सनल प्रॉपर्टी का बारे में इसका। तो यहाँ तो कोई पर्सनल चीज वो अपना घर बनाने वाला तो हमने क्वेश्चन राइट नहीं किया। वो अपना घर बना रहा है, अपना प्रॉपर्टी को डेवलप कर रहा है, वो चीज में तो हमने क्वेश्चन राइट नहीं किया। You can summon directly also. I think the right is huge. So I have to get this under section 94. Section 94. You can summon. You have what you done. That's what we should like. Actually, other years will have अच्छा अब मनाओ as per the RTI Act, you may ask the third party if whether the third party is willing to share that information to the information seeker. Have you done that? Yeah, see, सर तो ये सेक्शन का सर तो मेंटेनेंस है। इसका इसका जो जे जो है जो लिखा है उसको वैल्यू तो तुम जो बोल रहे हैं उसको कंसर्न पूछता है पुलिस, इसका मीनिंग पॉइंट्स का कोई वैल्यू नहीं बनता है। कंसर्न देना है बोले तो तब तो आपका प्रोजेक्ट पहला तो सिर्फ अपना काम करने से अच्छा है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में बोले इसको पब्लिक का प्रॉपर्टी होगा ना सर। जो भी यहाँ इन्वॉल्व है सबका सब पब्लिक प्रॉपर्टी में आएगा। यहाँ में थर्ड पार्टी का कोई एक्सक्यूज करके तो सर यहाँ में तो बात करके फायदा नहीं है। क्योंकि अगर उसको थर्ड पार्टी में एक्सक्यूज बनाते रहेगा, यहाँ पे ऑथेंटिक है क्या नहीं है, या तो क्वालिफाइड है क्या नहीं है, पता कैसे चलेगा। अगर इसको पब्लिक डोमेन में लेके नहीं आएगा तो पता कैसे चलेगा कि ये सच में जीनियन कंट्रैक्टर है ना नहीं। हम उसको पर्सनली अगर उसका बारे में हर चीज डिटेल्स निकलता है पुलिस, तब वो मेरा एप्लीकेशन का हिसाब से हम उसका पर्सनली सब्जेक्ट बना के okay, इसको रखो। मनाओ, as the Chief Information Commissioner, I am directing you to give the information sought by the individual serial 15 and 16, because my personal opinion is that it does not in any way, uh, uh, you know, in larger public interest, the demand of the individual applicant is justified. Okay, so you may like to share this. You may like to share this information, because sharing this will not, in any case, hamper his business. It is just that he wants. Yeah. Okay, no, no, it's okay. नहीं, नहीं, GST return
जो इन्फॉर्मेशन इसका पास एक नहीं है मिनट contractor registration, trading license, and GST number would be available with you. Please provide that. Okay. And the contractor enlistment update reports, CNP affidavit copy of tender winning firm. This should also not be a problem because the work is already done, right? हो गया? एक्चुअली रिटर्न ये जीबी वाला जो लिखा है ये कॉपी जो जब पेमेंट करता है उसके नेसेसरी होता है कि कंट्रेक्टर जमा करने की इसमें कोई डिटेल अकाउंट डिटेल्स बिल्कुल भी नहीं रहता सिर्फ आपने रिटर्न फाइलिंग किया है उसका डिटेल्स देना है और कोई यहाँ पे पर्सनल वाला कोई अकाउंट का उसमें क्या है और उसका कोई इतना बड़ा डिटेल्स नहीं आता जस्ट आपको एक कॉपी दिया जाता है कि मेरा जीएसटी जो दे देते हो नहीं, but in any case, वो जीएसटी फाइल करना नहीं करना हो तो उसका चॉइस है। नहीं चॉइस नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनो यार। कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा हमने फाइल नहीं किया, आप क्यों फाइल नहीं किया बोल सकते हैं? नहीं सर इसलिए तो हम बोल रहे हैं अगर आपको द इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल इन योर ऑफिस वही तो हम बोल रहे हैं ना, बोल रहा है अवेलेबल नहीं है। उसको आप हमको ना ये रीजनेबल जस्टिफाई रीजन देके बताइए तो सुनोगे बिल्कुल आपको भी कोई वही तो हम बोल रहे हैं ना, होगा। तो आपका सफल हो गया अभी? ये But let's just repeat after hearing from him. Okay, now the next date of hearing will be fixed after I get a confirmation. हाँ सर दोनों दोनों एपिक नंबर हाँ किसी से क्लियर Regarding inspection, yes, yes. Don't inspection. तो ठीक है। अगर आप एक महीने के अंतर में हमको कंफर्मेशन देता है कि ये इंफॉर्मेशन मिल गया है दैट आई एम सेटिस्फाइड, we will cancel the hearing. Otherwise, the next date of hearing would be 17 December. 17 December, ठीक है? आप वैसे रह लेता हूँ कैसे ऐसे पता नहीं दिया तो इंफॉर्मेशन को है वहाँ से डायरेक्टली दे देता ठीक पब्लिक इंटरेस्ट है इसमें उसको दे दें लेकिन क्या होता है वो थर्ड पार्टी ने कॉन्टैक्ट कब में जाके केस भेजते हैं हाँ नहीं वो ऐसा नहीं कर सकते एक्चुअली फोर्थ टेक्नोलॉजी Serial number 2, AP723. हमें भी मेरा वाला होगा ठीक है और sorry serial number 2 sorry serial number 3 one sorry serial number 2 epic 726 only 2023 Sri Tamsi Gunke versus EPWD Jayrampur Department Division sorry MEJ अच्छा you are MEJ इसका what is the problem now सर इसमें हमको इन्फॉर्मेशन इन्होंने बाय पोस्टल भेजा था इन्फॉर्मेशन का ओके तो उसको हमने ये बस वेरीफाई किया और हमने स्टडी किया इसमें अभी तक उसका रिप्लाई सेम ही है तो पॉइंट्स का कि सीरियल नंबर 3 जो है द यूसी हमने जो यूसी सीख किया था तो उसको उन्होंने बोला कि अभी तक कोई फाइल रिलीज नहीं हुआ है ऐसा रिप्लाई किया तो एज पर माय नॉलेज ये स्टेटमेंट जो रॉन्ग स्टेटमेंट है मेरा हिसाब से क्योंकि अगर प्रोजेक्ट बिना सेंशन होके कोई काम नहीं कर सकता और अगर प्रोजेक्ट सेंशन होता है तो सबसे पहले एनआईटी होता है सब कुछ फंडिंग वगैरह अवेलेबल होती है एंड दिस इज द कॉपी ऑफ दिस ये एनआईटी जो रूल्स है तो इसमें क्लियरली लिखा है कि जब फंड अवेलेबल होने के बाद टेक्निकल सेंशन होने के बाद
सब कुछ होने के बाद तभी टेंडर होता है। ये एक मिनट हम समझ गए। ये सर ऐसे है, ये 8th हियरिंग है सर मेरा, 8 टाइम्स हो गया, 8 बार अनऑफिशियली बोले सर 10th हियरिंग है सर। ओके सर, इससे हम परेशान हो गया, हमने इसलिए ऑनरेबल से मिला है वोटन साहब से और डीसी को ही बोला है कि सर ये डीसी ने भी सर मिनिस्टर प्रधान को नोट किया ये हम लोग सर इसमें एग्जीक्यूटिव फंडिंग अथॉरिटी सर इसमें सजेता डिपार्टमेंट है और सर इसमें इसको शांति सब्जेक्ट को दीजिए ये उनका ये होता है सर इसमें स्कीम जो सर 2022 में सेंक्शन था, इसमें अलॉटमेंट और दिखाया कि हम लोग को 51.325, लेकिन सर सेंक्शन जो 14 फरवरी को हुआ था तो टेंडर पॉसिबल नहीं था, तो कैरी ओवर हुआ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, इसको सरेंडर हुआ मतलब हमको जमा ही नहीं हुआ था, ये पेमेंट ये पेमेंट मोड में होगा सर। अच्छा, ये एमएलए ने भी दिया है कि सैंक्शन हुआ है लेकिन अमाउंट हैज नॉट बीन। सर एमएलए का कोई ऑथराइजेशन थोड़ी नहीं चाहिए फंडिंग आप ना लूंगे सर, आप इसको आप गलत समझा आगे मारे, आप सजेता को मानना चाहिए और आप इसको डीसी को मानना आप बात तो नहीं समझ रहे। अरे आप हाँ इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाएं। सबसे पहले आप मुझसे पूछा करेंगे नहीं दीजिए, हमने पेपर में पब्लिश किया, एनआईटी हुआ, नहीं नहीं आप सर ये सारी की कॉपी आप तो सर एक टेक्निकल आप फॉर्मेट से ड्रॉ करता है और एनआईटी कब होता है आपको अच्छे से पता है। हाँ कर दिया एनआईटी कब होता है आपको अच्छे से पता है। तो आपको बिना टेक्निकल सेंस बिना फंड अवेलेबल का आप लोग नहीं, हम लोग जो है सेंक्शन दिया था हमको ना, सेंक्शन पे बेस हम पब्लिश होता है। सेंशन तो तब होता है जब फंड अवेलेबल होता है। नहीं सेंक्शन आपको दे दिया, हम दिखा रहे हैं ये सेंक्शन कॉपी, ये कॉपी तो मेरा पास भी है इसमें तो इसमें देखिए सीरियल नंबर 7 में देखिए डीसी को नोडल ऑफिसर है और यहाँ में क्लियर कट लिखा है कि फंड जो है पंजाब और सिंध बैंक में दिया हुआ है गवर्नमेंट में, सजेता डिपार्टमेंट का अपना अकाउंट में। नहीं सर उसको आपको पता है। हमें तो हमको वो लोग नहीं देगा, देखिए सजेता डीसी को देगा, सर यहाँ पे डीसी हमको देगा। नहीं आपको हम क्लियरली एक बात बता देते हैं सर। हाँ यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ एनआईटी में तब होता है या इसका सीरियल नंबर 6 में देखिए ये सीपीडब्ल्यूडी का गाइडेंस है सर। अरे मेरे भाई देखिए ये सेंक्शन हुआ ना, इसमें क्लियरली लिखा है फंड अवेलेबिलिटी होता है तभी एनआईटी करता है। आप लोग फंड बिना अवेलेबल होता है लेकिन बोल रहे हैं ना फंड तो सैंक्शन हुआ है, सेंक्शन कॉपी आपको दे रहे हैं ना मैं, सैंक्शन का ऊपर में तो सेंक्शन हुआ, मैंने पेपर पब्लिश किया, न्यूज़पेपर पब्लिश किया, तो ठीक तो बोल रहे हैं। एनआईटी दिया, काम हुआ, सैंक्शन 90% हो मतलब गया पैसा अवेलेबल होकर तो सैंक्शन करता है, सैंक्शन और का फंडिंग बेसिस पे तो टेंडर करेगा। और काम 90% हो गया, कॉन्ट्रैक्टर को एक रुपया नहीं देना पड़ा। फंडिंग इसका होता है, एलओसी देने के बाद हाँ। फंड आता है ना। नहीं सर यहाँ में एलओसी सिस्टम नहीं है यहाँ पे डायरेक्ट ये पे तो इसमें क्या है कि अगर फंड अवेलेबल नहीं है तो आप काम कैसे कर रहे हो ये हम समझ में नहीं आ रहा है। सर ये सीरियल नंबर 7 में दिक्कत है, डीसी डीसी फंड डीसी के पास जाएगा, डीसी हमको देगा सर। सीरियल नंबर 7 में But what is the reason why they haven't used the funds so far? सर सभी का ये मालूम होगा सर क्या, डीसी को मालूम नहीं सर, डीसी को हम बात करते हैं। And who had executed this work? सर पीडब्ल्यूडी The commissioner is the first applicant. सर Okay. आप ऐसा करो, ये information जो बोल रहा है, you are not satisfied, so you go to the first applicant. That is the deputy commissioner. Okay. Now first applicant को apply करो, same चीज की। तो ये मेरा इसमें तो सर इतना साल हो अरे गया। सुनो, हम क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है ना इसके पास नहीं है, तो now you go to the first applicant, आप इसको बोलते रहने से कुछ नहीं होगा। First applicant, this is the procedure. टाइम तो हो गया ना वो, तो go to the first applicant, let me see if the first applicant has the response or not, then we'll take action. Okay. Otherwise we'll keep going around, merry go round करता रहेगा।
So the appellant is advised to approach the first appellant. एंड आपका क्या काम है जो इन्होंने एप्लीकेशन दिया है प्लीज रीडायरेक्ट इट टू द फर्स्ट एप्लेट ओके विथ अ कॉपी एंडोर्स टू द कमीशन आप एक फ्रेश एप्लीकेशन डालो फर्स्ट एप्लेट को विथ अ कॉपी एंडोर्स टू द कमीशन ठीक है हाँ, ठीक है वही कोई से कर आप बस एप्लाई हाँ, करें जो बिल्कुल बिल्कुल प्रोसीजर वही है वो नहीं दे पा रहा है वो नहीं दे रहा है जो भी This case will be difficult. हम्म, We have to request application. yeah, he will forward a fresh application to the first सर और मेरा एक रिक्वेस्ट है बोलो सर ये सर तो बोल के गया है कि इसी है इसका ये नोडल ऑफिसर ने बोला ना इसको आपको रिटर्न में देने से आता है नहीं नहीं वो चिट्ठी पे है ना उसमें तो चिट्ठी में तो जस्ट कंप्लेंट के लिए दिया हुआ है ना ऐसा नहीं है कि यार चिट्ठी में तो सर बहुत लोग को दिया है तो हर किसी को तो हम अभी कितना नहीं नहीं आप उसका कंटेंट पढ़िए ना इसी के अगेंस्ट में क्या लिखा है बहुत लंबा चौड़ा लिखा है उसमें। सर इसी जो हर एक विजिलेंस का चेयरमैन रहता है नहीं, नहीं, इसमें एक मिनट तो देखिए अंडरलाइन मत करके ना सहायता जो डीसी को देगा यहाँ पे सर आप दिखाएगा क्या सभी प्रोजेक्ट किसी को देगा हाँ जी ऐसे में काम आपको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि कंफ्यूजन को क्लियर करने आया है ये देखिए ऐसे नहीं अकाउंट में काम ऐसे नहीं अकाउंट अकाउंट ऐसे नहीं अकाउंट ऐसे ये पेमेंट्स पे बिल पे अकाउंट ठीक है इसको योर डिस्पोजल ठीक है ना ऐसे नहीं अकाउंट ये पेमेंट्स अंडर योर डिस्पोजल वो उसको देगा फिर वो हमको देगा हम फिर बेनिफिशियरी को आपका डिवीजन ने अभी तक दिया ही नहीं नहीं दिए ना फिर हमसे इसलिए इवन थर्ड पार्टी का भी आप कंप्यूटर दीजिए रिक्वेस्ट किया क्योंकि उसी के लिए फंस रहा था हाँ सुनने में तो थर्ड पार्टी था और ये वो हम रिक्वेस्ट नहीं देता क्लियर हो गया number 2 723 apparent Sri Kaya Parang Ronda respondent Aduk Paran PIO come DFO Divisional Forest Officer Kelong Forest Division Kaya Parang Ronda दे दीजिए क्या बात सर ये जो जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट आ सकते हैं ओके ये 9 मई 2023 को पार्टीशन कनेक्शन है तो इस डेट से लेके आज तक जो है डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया अच्छा आप कहाँ मुहूर्तम है क्या ओके okay now so what is your answer to the statement made by the appellant saying that you have not furnished any information so far आप क्या बोलना चाहते हो या
आपको कुछ मिला था? उसमें सर ये जो एक कागज भेजा है, उसमें इतना सब दिया है कि सैंक्शन क्या क्या हुआ है, वो याद है 1950 में। उसमें जो सैंक्शन कौन कौन सा काम जो सैंक्शन हुआ, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट पब्लिश नहीं किया है कि जो जो काम हुआ है, उस काम का जो काम चला है, उस काम का जो डॉक्यूमेंट पब्लिश नहीं किया। तो आप बोल रहे हैं कि मतलब जो है डॉक्यूमेंट उस वक्त जो आप नहीं था, एक डेट टाइम जो उसमें सर ऐसे था कि जावल था उसमें जावल। तो जावल जावल जो है बीच में ट्रांसफर होकर चला गया। तो फारूक सर जो इसमें शायद 2 बार अटेंड किया। तो रिंचिन सर था उसने जो Tell me one thing, what is the full form of ANR? ANR। सर What is ANR plantation? What is ANR? I just want to know. सर ANR जो है जो मतलब जो है वो नर्सरी प्लांटेशन। State natural regeneration. State natural regeneration. Okay. State natural regeneration. Assisted natural regeneration. That is what the Google says. So I suppose it is that. So the information sought by the appellant is well, what I can understand is कि उन्होंने 2019 से 2023 का मांगा है. It may be possible that you don't have all the this thing, but latest years का तो available होना चाहिए ना. You can't say that all the records are missing or not available. That is not a justifiable response to say that it is not available. You have to justify why it is not available. And this was in the last hearing, I think it was made very clear to you that you will provide the information within 15 days and give justifiable reasons in case there is no information under his control. So you had agreed to do so. Now, if the information is not available, why is it not available? You tell me why it is not available. Hmm.
See, if the forest department, if the forest department as a whole has not provided an SOP, standard operating procedure, for implementation of such ANR projects, then there is a lacuna in the system. I mean, you cannot have projects being implemented without guidelines. I don't agree with you on this, that there are no guidelines available. No, I'm sure there are guidelines available, because if you are not providing this and if you are saying that these projects are being undertaken without any records, then there is something wrong. I'll not buy the story. सर इसमें एक चीज थे हाँ, सिर्फ जवाल था हाँ, उसमें जो शेर में गरीबा था का उधर जो बंदर तो ने बड़े जी, तो उस वक्त जो जवाल जो बोला था अभी आप जो अभी जो इस हेयरिंग में जो आप लाया है तो पहले रेंसिल सर होता तो ये घुमा घुमा के नहीं देना चाहिए तो पहले से जो केस को इधर उधर घुमा घुमा के करते जो हमको बोला है कि इन्होंने कि एक पार्टिकुलर जो वक्त को चुनने के लिए मैंने उनमें से भी एक चुना तो उसका भी डॉक्यूमेंट फर्निश नहीं कर पा रहे सर ऐसा है कि जो जावल से मैं जब बात हुआ तो जावल ने कहा कि वो जो है दिल्ली से कागज जो है कलेक्ट कर रहा है तो हम सर से जावल सर से भी बोला कि सर आप लोग यहाँ में काम इधर बालकुन ये केलून डिवीजन में काम करता है आप दिल्ली से पेपर क्यों मंगा क्या वहां तो स्कैनिंग करके लाए आप लोग काम कर रहे हैं तो आप लोग का पास में डॉक्यूमेंट होना चाहिए आप लोग बिना रिकॉर्ड का कैसे काम कर सकते हैं हाउ कैन यू डू आप लोग बिना रिकॉर्ड में काम कैसे करते हैं सर ये परुण सर भी बोला है कि ये जो है आप सुनिए आप अभी बोला है कि डॉक्यूमेंट जो अवेलेबल नहीं है परुण सर से भी हम कई बार यार 2 बार हेयरिंग हुआ था ना 2 बार हेयरिंग हो चुका तो उस वक्त परुण सर भी बोला है कि डॉक्यूमेंट जो है कलेक्ट कर रहा है तो कहाँ से डॉक्यूमेंट इतना महीना से इतना अभी साल हो रहा है साल हो चुका है तो इतना इतना महीना में आप लोग डॉक्यूमेंट कहाँ से कलेक्ट करें चेनिंग करके जब्त करके ला रहे हैं ये नहीं बनता है ना आप लोग अगर काम किया है तो डॉक्यूमेंट हम आपका थोड़ी ना प्रॉपर्टी मांग रहा है आपसे डॉक्यूमेंट ही तो मांग रहे हैं जो काम किया उसका साइन करके आप कागज फाड़िश करो आई विल सेटिस्फाई who is your PI? Who is your PI? Now, who is he? The Param. You do one thing. Please ask Param to speak to me on my mobile, and explain to me why these things have not been furnished till date, and why there is no SOP guideline available, why there are no records available. I'd like to know, because if there are no records available, then I'm going to write to the department, your department head, the honorable minister, because such a callous or this thing approach is not acceptable. We have to have records. It's not possible that you are doing work without records here. Okay, so please ask your PIO to speak to me. My number should be available. If not, please get it from my PS. But I'd like him to speak to me and give me the reason why it is not there. I'll take further action based on that. Okay. Because as of now, you have no answer. You are saying that records are not available. सर ये लोग जानबूझ कर आज भी जो है पीआईओ को नहीं ला के पीआईओ जो किसी और को इसको भेजा आ रहे हैं तो पीआईओ जो आप हिटिंग करना चाहिए था हिसाब से No, उसमें जो कोई कारण से अटेंड नहीं भी कर सकता, ऐसा बात नहीं है कि PIO ही आना है, ऐसा नहीं है। ऐसा तो हो सकता है नहीं, वो पीआईओ आ सकता है, ऐसा बात नहीं है। तो
उसमें कोई ये नहीं है, हमको लेके हमको और आंसर हमको भी चाहिए कि क्यों नहीं है। ठीक है, हम सुन रहे हैं ना, हम तो बोला है कि PIO must speak to me and give me the reason as to why there are no reports available, why there are no guidelines available. If it's so, then I'm going to take the matter up at the higher level. इनका कहने का मतलब वो है कि पीआईओ से बाद में बात कर लेगा, तो दैट मीन्स पीआईओ और कितना चाह नहीं, बात कर लेगा तो नहीं बोला ना, हमको बात करो बोला है, हम आपको बात करने नहीं बोला। आई वांट टू नो। ठीक है, आई विल नॉट गिव a decision right now without hearing the PIO. He's got no answer, RFO has got no answer. I'd like to speak to the PIO, then I'll take the further course of action. Okay. And Murtha will take it seriously. Otherwise, the thing will hit the shit will hit the ceiling, I'm telling you. Yes, yes. हो गया ना? Okay, let's suppose of Serial number 5, Epic 257, oblique 2024, Sri Takar Jammu, PIO, Office of the Deputy Commissioner, Namsai District. morning. Subject, yes. All right. PIO, what's your name, please? My name is Kalan Sao. Okay. Yeah. All right. Yes, share on WhatsApp that I have printed out. Have you got a copy of this letter here written? Okay. Okay. What they have written is that most of the information relates to the DLRSO. Okay. And so it has been forwarded to the DLRSO, which has been, I think you also must have received a copy of that. Okay. As far as the information at point H is concerned, the appellant was notified to submit the required fee of rupees 2 through a treasury challan. However, neither the fee has been deposited nor the information was collected by the appellant. So in the first appeal, it was mentioned that the information had been received on time but was deemed unsatisfactory, right? You have insisted that actually the PIO or DC office should provide the information and not the JRS or non-signed. Okay. As mentioned, the PIO, It's a DLS and also is a DLS and also is a okay, same. So, DLS and also is there. so you have already got the information from DLS. Yes, sir. Misinformation, right? Misinformation. That will get.
is your submission to this? So this case is basically based on the land reliance occupation certificate issued to only during who is a non-APSP. Then regarding that, I have written a complaint letter to the concerned DC, DLRSO, and the Director of Land Management. Then, seeing no other way, I have filed an RTI. So I have got information from the DLRSO in the other case. They have, I have requested specifically that the concerned PI of the DC office should provide me the documents. Because I want to check it, how can a non-APSP be given this land occupation certificate? This is a basically what RTI concerns. What has the dealers to given you? So here, that will be coming up the next case. But he has given me that on the basis of give deed, he has given this LOC. That was his reply. That will be coming up in the second case. Okay, so who has given the gift deed? Sir, By who has given the gift deed to? only during his father. But if you see in the Cheetah register, it is in his great grandfather name. That also is late. The other thing is, how can the DLRs issue a land occupation certificate to a non-APSP? And what were the guidelines which are asked in other case? Then to clarify on that, I had asked the DC also, the PI. But whenever we give a appeal letter, they revert back to the concerned department. So this is another case also. The returning of my complaint letter to the Director of Land. Whatever I give a complaint, they'll return it, report it. They'll try to avoid my queries. Sir. So this is a very important issue. The state issue actually, sir. They should at least the DC should at least clarify because whatever certificates are being issued is under this department. It is not that DC does not know. I have always given a complaint letter. Uh, See, what the appellant has said Yes, sir. is quite relevant in the sense that finally the first appellate is the deputy commissioner. Okay. Yes, sir. So if PIO or the DLRSO, both of you are not providing the requisite information, then he will have to take recourse to appealing to the first appellate. Then the first appellate has to answer and give a decision. All right. So finally, it will come back to the DC. So if you can provide the information now, it would have been easier. But since you are saying that you don't have record, then naturally you'll have to approach the DC, who is the first appellate. And then, So it was already in yeah, you already okay. Did you apply to the first appellate? wait. Then, That of the information I had provided. I got a letter 9 days late. 9 weeks, 9 days late. 9 days later. Yeah, after the hearing period. Then that also I given the clarification from the concerned postmaster also. This also I provided them. Okay. This is the concern why they have delivered late. Then I got this handwritten and notes also, signature or the concerned post. And that Just show me this. this is the third, this is the second personally has won the Namsa and somebody by hand also. Twice I have written a letter to the schedule of the hearing. Twice. There is there was unfortunate. Okay, do one thing. You give a next date of hearing of the first appellate. Please ask the DC to give a fresh date under intimation to this office. Okay. You must conduct the hearing. Okay. Conduct the hearing, give a fresh date, give the dates to us also. I will monitor it. Here. And next 1 week, please get back to me in writing as to what is the next date of hearing and also inform the appellant in time
આજકાલ social media is very active. You can always send messages on WhatsApp also, on email also, not only through postal service. Please do that, and let's have the hearing done by the first applicant. Okay. All right. Number six, Epic 258 of 2024, Sri Akar versus DLRSO, Office of the Deputy Commissioner, the Commissioner, Namsai. It is the same thing. Ah. No, it is dealing with the same subject. All right. Only Deori के case है ना. So what is the content in this? What is the problem in this now? So the first, the reply was given me on the 10th of June 2024. Okay. Then likewise had given a clarification letter to concerned DLSO that kindly give me in the proper format. So I have enclosed his reply also. This was his format. I have asked him to give my RTI query here and the reply on the same format. To change the format. Sir. That was the first note there. Sir. And the second was that he has given me, I had asked him, the first query was that is Shri Oni Deori, son of Shri Pinat Chandra Deori, the legal landowner of Dark number 77, as per the Cheetah Register and the Cadastral Survey of 1968. If it's yes or no, he said he has mentioned yes, as per gift deed dated 26th August 2023, copy and close. Okay. So here first case, I would like to show you that. So this gift deed, as he had mentioned, was on 26th of August 2023. Yeah. But he had given this land occupation certificate that is in 4th November 2022. So he had issued the LOC. Then after that, he had based on the gift deed that was issued on the 2023, a year late. This is the first discrepancy. Sir. So then the second point was that in the first point, he had said that tab number 77 is the own landowner is Onigiri. In the second part, I queried him as to, again, I have asked the same question. Is Shri Kokeshwar Diori the legal landowner of tab number 77? Here also, he has mentioned it as yes. Okay. Then simultaneously, there are two landowners for the same land. Okay. Then point number C, that I'm satisfied with. And the other point was point number D. Provide the CTC details of land occupation certificate bearing dash 90/2009 annexure enclosed issued to Sri Oni Deori, son of Tilak Deori, which must include the following documents. Okay, understood. Yes, ठीक है. application, SP, Yeah. forest clearance, Kabura certification, anything like that. So regarding this, he has given me a revenue clearance certificate and the to whom it may concern certificate from the Kabura. And so when we apply for any land document, we need to follow certain guidelines like application form, documents required, and all. But nothing has been given to me apart from these two documents. Sir. That was my third contention. Then point number E is the land occupation certificate bearing number issued to Oni Diori, son of Tilak Diori, legally correct as enshrined in the Arunachal Pradesh Settlement and Records Act in the state of Arunachal Pradesh. He has given us no. Then if he has given the answer as no, then why did he issue the land occupation certificate in the first place? That also is contradicting in his own answer. I find no logic in his answer. So anyway, Yes, sir. now this is the same case. So when you have the hearing with the first appellate, Yes, sir. you can cover this also in that. Yes, sir. Okay. But I think so in that case there will be hearing. That's not the same query, sir. It's a little bit different. Okay. So if you issue an order, they'll be based on that particular RTI, I think so. Okay. And this is slightly different. This is based on his reply, sir. So here I have pointed out 5 or 6 points which I have not satisfied. Now, what I'm trying to say is, if in case the DC resolves the issue by providing you the
refugee documents as you have asked for. Why get into two cases? Because it's dealing with the same person. Only during the case, hai na? You are dealing with the PIO, then you are dealing with the LRSO, but you are having separate case. That is infractuous. That's what I'm saying. So then, so if you could guide them, order them to give direction regarding the reply regarding this case and that case, then it would suffice. Okay. So we इसलिए है लिखना that case number so and so. It also pertains to the same subject. There are discrepancies in the reply provided by the NRSO, the details of which are available with the applicant. Okay. The, the first appellate is advised to clear the two cases, file number so and so, together since it deals with the same subject. Okay. Table time. Okay. All right. Sorry, what's your name you said? Scenario number 6. Scenario number 7. Epic 259. 3 Foco Decam PIO EE RWD 0 division. Yes. May I have the concept of phone consumable by? Yeah. In first case, there was discussion regarding disclosing of information. Yeah. Second one, one case GST Act prohibits disclosure of information of filing of GST. The GST filing. No, what did I say? I said GST filing not required. I said you are getting the GST number. Oh, yeah, yeah. Thank you. Thank you. That's what I said. I find my income tax return and it should be other way. 150, section 158 prohibits disclosure of information of filing of GST. What is the latest on this? Status where and you are no communication received from him. Actually, what is this? You are Sachin Gera. Listen. Okay. Will be nominated as the API for the camp. Yeah. So, the data dated 20th August 24. Have you received this? No. It is addressed to you. Yeah, then, numbers of time I have visited the RWD executive office at Zero, Mongolia, too far from the town, Apoli town. So numbers of time. So I have even inquired such data. The billing obligation has been made. But when the last I uh, go there to resubmit my first appeal, appeal before the first appeal authority, but duly endorsed by this commission. Then only I have seen all this data. They said, you take it, this time I did not, I'm not in a position to receive it. Even I have called to DIO, even I have talked to the past appellate authority,
Even I have made a WhatsApp communication. I have connected my WhatsApp, but no reply. But during election time, the London PIO has short some time because we was busy in election. So that excuse, I could not able to make happy or a fear of property yesterday. सर हम लोग ऑफिस ने सर लेटर समय पे दे दिया सर ये बोल रहा है what we are saying is that with respect to the letter enclosed, it is informed that this office has not received till date the payment needed for furnishing of RTA documents. Did they have asked you to on 4th tender documents 500 rupees? ठीक है, as per this thing, treasury challan to executive engineer RWD 0 to enable us to record it. So this was 11 June letter. 11th June. Yeah. And my RTA was filed on Your Honor, this is on 27 February 2024. 24. Yes, February, Okay. before commencement of election model code MCC. But we have written, we are in receipt of your RTA application ID number dated 15th May 2024. It says 15th May. So I think first appellant, the appellant का. That is The first appellant. the first appellant, application was उसको refer filed on करते हैं. 15th क्या May. understood? Yes, ठीक है. there's some lapse of three months. Anyway, why has the first appellant conducted to hearing? क्यों नहीं हो पाया? क्यों पैसा नहीं दिया? सर हियरिंग तो कंडक्ट किया था कहाँ कंडक्ट किया तब हम सर ये सेकंड लेटर भेजा था सर नहीं, मेरा पास व्हाट्सएप में अगर आप देखिएगा तो पीआईओ को भी लिखा वाला वो भी एनक्लोज करके तो रखा हुआ है अच्छा ओके. हाँ चलो ऐसा है. Hold on. सर ये लेटर भेज दिया था लेकिन वापस आ गया था आई थिंक द एड्रेस वाज रॉन्ग नहीं, anyway, तो no, let's not fulfill the issue here. You see, you cannot avoid the situation. If we have certain information that has to be provided. सर द If you are not एवरीथिंग able इज रेडी सर हाँ? सर रेडी है सर information ready है. इन्फॉर्मेशन रेडी है लेकिन वो ऑफिस पे है तो वहाँ पे आप रिसीव करना पड़ता है एप्लीकेंट को तो आप ऑफिस पे आके Okay, simple. He's saying information is available. Yeah. You collect it, give a date. Today is what? The responsibility of PRS should be fixed today because I नहीं, have बोल आज का डेट क्या है? Okay, now the first appellate का hearing था ना? Managing Director, HPDCA appeal, right? इन्होंने तो फर्स्ट appellate को लिखा था ना? उसके हिसाब से आप लोग का एक्शन नहीं हुआ है तो हम डायरेक्शन दे रहा है that as per information given by you, you are saying that the documents are available in the office, right? Yes, sir. So you will provide the documents to the appellant on today's date. Today is 19th. Okay. So I'm giving you 2 weeks time. Yes. Okay, I'll give a particular date when to go and collect. On 3rd December. On 3rd December 2024. You please go physically and collect the documents from the office of the ruler of the department, Neo division, zero division. Okay. At 1100 hours. At 1100 hours. Okay. I'm giving you the time also. अब ये मत बोलना कि उस दिन हम लोग ऑफिस बंद था. ठीक है? हाँ. That's why I'm making it very clear. 3rd December 1100 hours
he will come to your office and the information will be provided. Okay. If you have any observation on the information provided by the department, you may intimate immediately to the commission saying that these are the discrepancies which have been observed. So we'll fix the next date of hearing if the information provided is not adequate. Okay. So, Your Honor, in my case, Section 20 should be invoked because I have every communication that I have. No, let's not. Okay, and just such a irresponsible PIO. Okay, that's why I'm giving a date and time. No, finally, information to उन्हीं से लेना है. So I'm giving direction that the information will provide. Information I will collect. Yeah. Even then, let why Section 20 should not be invoked against Mr. PIO, Lanet PIO. On next hearing, he may be called before this commission. Because in case, no, what I told you, exercise my own energy. Okay, what I've said is, Nikam, what I've said is, he will provide the information. If you have observation on the information, please intimate to the commission that this information is not adequate with a copy endorsed to the PIO, okay, or the first appellate, and then we'll give a summon for the next date of hearing in which I will direct the PIO to be present personally, physically, okay. सर यहाँ पे ये कम्युनिकेशन का एड्रेस दे देता तो सर तो हम लोग ने तो लेटर भेज दिया था आप ले लीजिए आप प्लीज गो गेट दी व्हाट्सएप में भी कर सकते वो तो सर ऑप्शन होता है ना सर नॉट ऑप्शन रजिस्टर फॉर अगर आप आजकल झगड़ा मत करो आजकल इंटरनेट का जमाना है ईमेल एड्रेस दे दो पोस्टल एड्रेस दे दो do through all the channels ensure that information is given to him. That's why I'm saying physically he will come and collect. Okay, so that there are no communication. जो एड्रेस दिया हुआ है सर वो Fees, record fees, or without fees. This is information pertaining to the month of February 2024. Now it's November. So 6 महीने से क्रॉस हो गया ना सर लेकिन लेटर तो हम लोग ने सर दे दिया था नहीं आपका लेटर जून जुलाई का है वो फर्स्ट एप्लेट वाला आप बोल रहे हैं जी सर वो पीआईओ का केस तो फरवरी से शुरू हुआ है ठीक है सो देन ही इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द फीस Correct number 8. Well, same PO, same appellant. ये क्या केस है सेम केस सब्जेक्ट तो सेम है इसका भी सर रेडी है सर so right there also refer to case number so and so dito ठीक है हो गया दोनों केस एक साथ डील करेगा फिर अभी ठीक है done yes that will see I told you already no I see this is my first hearing I've taken a decision you must respect my decision okay thank you